Hello students, welcome to Sarv's classes. My name is Ashmita and in today's class we are going to talk about the Rajasthan Eligibility Examination for Teachers, that is the REET for this year. So this REET examination notification have been released by the Chief Minister Ashok Gehlot, and this exam will take place on 14th of May and 15th of May in this year. And the REET examination will be held for the recruitment of around 20,000 new teachers according to the Chief Minister. तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है rajeduboard.rajasthan.gov.in. यही है ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे जाके आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. तो लेट अस नो अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न एंड क्या क्या है, इसी को डिटेल्स में जान लेते हैं. तो रीट का जो सिलेबस है इस साल के लिए उसमें दो पेपर्स रहेंगे. एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2. पेपर 1 of the REET syllabus is designed for the primary stage, that is for class 1 to 5, while paper 2 is designed for the elementary stage for classes 6 to 8. Now questions on child development and pedagogy for paper 1 and 2 according to the REET syllabus will concentrate basically on the educational psychology of teaching and learning applicable to the age groups of 6 to 12 years and 11 to 14 years respectively. The primary and the elementary stages are covered within this category only, and according to the syllabus, the questions on proficiencies which are related to the medium of instruction will be included in the language 1 section, and questions in language 2 section will concentrate on language comprehension abilities in both paper 1 and paper 2. नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो सेक्शन है या फिर जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आ सकता है. एक्शन रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस, हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, then teaching and learning process, then learning difficulties, theories of learning and its implications, motivation and implications for learning, the role of heredity and environment, individual differences, factors affecting learning, meaning and purposes of assessment, then understanding the diverse learners, meaning and concept of learning and its processes, the Right to Education Act 2009. Let us discuss in detail the REET syllabus for environmental studies. Now in environmental studies, you can be asked questions based on living beings, then personal hygiene, family, culture and civilization, then on matter and energy, public places, institutions, then problems of teaching, concept and scope of environmental studies, then separately environmental studies से भी आपको questions मिलेगा, and environmental education से भी questions मिलेगा, then different principles to be followed to protect our environment, इससे भी आप लोगों को questions मिलेगा. then discussion होगा, फिर experimentation या फिर practical work भी होगा, comprehensive and continuous evaluation के ऊपर भी questions मिलेगा, then clothes and habitats के ऊपर questions, then profession, transport and communication के ऊपर questions, and significance of integrated and environment studies, then approaches to presenting concepts, then teaching materials or aids, scope and relation to science and social science के ऊपर, then activities are there. Now let us discuss in details about the syllabus of mathematics and science. मैथमेटिक्स या फिर जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम परसेंटेज, लिविंग बीइंग, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, इंडिसेस, algebraic expressions and factors, heat, light and sound, solar system, chemical substances, animal reproduction and adolescence, then force and motion, ratio and proportion, lines and angles, then surface area and volume, plane figures, equations, interest, then area of plane figures, statistics, graph, microorganisms. Then there is REET syllabus for social studies also. In social studies, you might get questions based on pedagogical issues. Then there is geography and resources of Rajasthan. Then resources and development, Indian civilization, culture and society say questions, Mauryan and Gupta empires and post-Gupta period. Then Indian constitution and democracy, main components of the earth, medieval and modern period, geography and resources of India. Now let us discuss about the syllabus for English paper 1. There is this principle of teaching English. You will be asked questions from here. Then framing questions including WH questions, that is what, where, whom, these kind of questions, whose,
So next, you can be asked from teaching learning materials, then development of language skills, then teaching learning materials, unseen prose passage दिया जाएगा, then comprehensive and continuous evaluation पे questions होगा. Next, we are going to discuss the REET syllabus for English paper 2. Here you are going to get one unseen poem, then there would be principles of teaching English, communicative approach to English language teaching, then there would be questions from English, basic knowledge of the English sounds and their phonetic transcription, then modal auxiliaries, then phrasal verbs and idioms, then literary terms, then about the challenges of teaching. Now, let me tell you about the exam pattern, that here all these sections, that is starting from child development and pedagogy, then mathematics, language 1, language 2, environmental science, all these 5 sections will have 30 questions, which will in which there would be 30 marks allotted. So in each section you are getting, or in each subject you are getting 30 marks, and in total you are getting 150 questions, and 150 marks would be allotted to all these 150 questions, and you are also getting 150 minutes to complete this. Now let us talk about REET पेपर 2 एग्जाम पैटर्न. पहले जो मैंने बताया है वो था REET पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न. अभी REET पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही सेक्शंस हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, जहाँ पे फिर से आप लोगों को 30 क्वेश्चंस मिलेगा एंड 30 मार्क्स अलॉट किया गया है. देन उसके बाद है लैंग्वेज 1 का सेक्शन, जहाँ पे आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कुछ भी हो. 30 क्वेश्चंस मिलेगा इस सेक्शन में और आप लोगों को 30 मार्क्स दिया जाएगा. फिर आता है लैंग्वेज 2 का सेक्शन. यहाँ पे आप लोगों को कोई एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, और जो सब्जेक्ट्स का चॉइस दिया जाता है उनमें से है हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है और गुजराती भी है. तो वंस अगेन यू आर गिवन 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स वुड बी अलॉटेड टू इट. नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस का सेक्शन, जहाँ पे आप लोग को 60 क्वेश्चंस मिलेगा और 60 मार्क्स अलॉट किया जाएगा. तो ये जो सेक्शन है इसमें आप लोगों को मैथ्स और साइंस, अगर आप साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको साइंस में से क्वेश्चंस मिलेगा, और अगर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए लाइक टीचर के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो देन आपको सोशल साइंस से क्वेश्चंस मिलेगा. सो इट्स बेसिकली वन सेक्शन वेयर आपको आइदर साइंस चूज करना है या फिर सोशल साइंस चूज करना है. तो जो भी ये सेक्शन आप चूज करते हैं आप लोगों को 60 क्वेश्चंस दिया जाएगा, जहाँ पे होगा 60 मार्क्स. सो ऑल टोटल मिला के वंस अगेन 150 questions are there and 100 marks will be allotted to all these questions. So all total मिला के 150 questions है और 150 marks allot किया जाएगा, and time भी है 150 minutes के अंदर आपको खत्म करना है. तो ये था इंटायर पैटर्न और सिलेबस अबाउट दिस REET एग्जामिनेशन. तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है और एक ही अटेम्प्ट में आपको अगर जॉब चाहिए देन यू नीड द गाइडेंस ऑफ अ गुड मेंटोर एंड अ गुड कोच. और हम सौरभ क्लासेस में ये मेंटोर, ये कोच आपको प्रोवाइड करेंगे. हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, एंड हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसका सोल्यूशंस. देन अगर आप हमारे क्लासेस में एनरोल करते हैं तो हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली लाइव लेक्चर्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड करके अपने पोर्टल में अपलोड करते हैं, सो दैट कैंडिडेट्स इफ दे फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर द लाइव क्लास दे कैन visit these lectures once again, and even after that if they want to visit these lectures they can visit them 24/7. It's free for them. And अगर आपको और भी कुछ जानना है हमारे क्लासेस के बारे में देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा. आप हमें कॉल कीजिए और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं. किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें पेज कॉल करके पूछ सकते हैं. और यहाँ पे एनरोल करने के लिए भी आप लोगों को कॉल करके अपने आप को एनरोल करना है. और भी कुछ अगर जानना है तो आप सौरभ क्लासेस का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप वहाँ से जान सकेंगे कि हम कैसे अपने क्लासेस को चलाते हैं, तो कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं एंड ऑल द डिटेल्स.
सो अगर आपको एनरोल करना है तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं वेबसाइट से, और अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से एनरोल करना है इंस्टीट्यूट से तो आप हमें कॉल कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए. So that was all about our classes, and that was all for today's class also. We are going to meet once again in our next classes.